Hi friends, welcome to my channel Learning Made Easy. Now I am with a video that has been requested a lot, and that is question answers on the chapter Smriti. So Smriti is a chapter for grade 9, and as I always say, please go watch the summary I have explained in English for the chapter Smriti before you watch this video. I will be putting its link in the description box as well. Okay, so let's begin the explanation of question answers of the chapter Smriti in English. फर्स्ट क्वेश्चन, भाई के बुलाने पर घर लौटते समय लेखक के मन में किस बात का डर था? सो व्हेन लेखक्स भाई वाज कॉलिंग हिम, ब्रदर वाज कॉलिंग हिम, डर था उसके मन में. देयर वाज सम काइंड ऑफ फियर. डर मतलब fear in his mind. So what fear was it is the question. Let's see the answer. जब लेखक झरबेरी से बेर तोड़ रहा था तभी एक आदमी ने पुकार कर कहा कि तुम्हारे भाई बुला रहे हैं. So लेखक was if you know the chapter, Lekhak was coming back from school, so he was near to a tree. Okay, Jharberi means a tree that has some kind of berries on it. So and he was plucking some berries from the tree at that time, and that is a time when some person comes and tells to Lekhak that, see, your brother is calling you. शीघ्र चले आओ. शीघ्र means fast. जल्दी चले आओ, come fast. ये सुनकर लेखक घर की ओर लौटने लगा. हियरिंग दैट, लेखक वॉज डिसाइडिंग और प्लानिंग टू गो टू हिज हाउस. पर लेखक के मन में भाई साहब की मार का डर था. बट इन द माइंड ऑफ लेखक देयर वॉज अ फियर ऑफ गेटिंग बीटन बाय हिज एल्डर ब्रदर. ओके, नाउ व्हाई वाज इट? इसलिए वह सहमा सहमा जा रहा था. सो दिस इज द रीजन व्हाई ही वाज गोइंग स्लोली स्लोली. सहमा सहमा मीन्स ही वाज गोइंग स्लोली टू हिज हाउस. उसे समझ में नहीं आ रहा था कि उसने कौन सा कसूर होगा. So he was not, he was actually thinking that what should be my mistake now. Kasur hona means what was the mistake he had done now. Means if the brother is asking me to come fast, maybe I have done some mistake for which I am being called. This was the fear in his mind that he'll get beaten for some kind of mistake which he himself doesn't know. उसे आशंका थी कि कहीं बेर खाने के अपराध में उसकी पेशी ना हो रही हो. सो देयर वाज अ डाउट इन हिज माइंड. आशंका थी कि कहीं बेर खाने के अपराध में. अपराध मीन्स अ क्राइम. सो द क्राइम माइट बी दैट आई एम ईटिंग बेरीज. सो ही वाज स्कैर्ड दैट मे बी आई एम गोइंग टू देयर बी अ पेशी. पेशी ना हो रही. पेशी मीन्स जस्ट लाइक व्हेन the criminals have committed a crime, they are called to the court. Okay, and उनकी पेशी होती है वकील के सामने. Okay, in the front of the vakil or in front of the judge, when a criminal is brought, it is said as peshi of that criminal. So now Lekhak was feeling, Lekhak was having the same feeling that he was going to be called, his peshi is going to be there in front of his elder brother because he was eating berries, and that is the aparad, the crime he had committed. This is a doubt of लेखक. Okay, वह अज्ञात डर से डरते डरते घर में घुसा. He was very scared, and being scared itself, he was slowly getting into the house. Now this is the answer to the first question. Let's move on to the next one. मक्खनपुर पढ़ने जाने वाली बच्चों की टोली रास्ते में पड़ने वाले कुएं में डेला क्यों फेंकती थी? So मक्खनपुर पढ़ने जाने वाली, मक्खनपुर is a place where these students were going to study. So बच्चों की टोली रास्ते में पड़ने वाले कुएं में डेला क्यों फेंकती थी? टोली मतलब a gang, that is the gang of students here who are going to Makhanpur to study. So why were they वाले कुएं में डेला क्यों फेंकती थी? Why were they throwing dela inside the kuwa? Kuwa means a well. Dela, they were throwing things or sticks sometimes so whatever was in their hand, they used to throw them into the well. So why were they doing that? मक्खनपुर पढ़ने जाने वाले बच्चों की टोली पूरी वानर टोली थी.
पूरी वानर टोली थी, मीन्स दे वर वेरी प्लेफुल एंड ऑलवेज प्लेइंग एंड सम काइंड ऑफ मिस्चीवस थिंग वाज बीइंग डन बाय देम. उन बच्चों को पता था कि कुएं में सांप रहता है. दे न्यू दैट इन द कुआं, इन द वेल, देयर वाज अ सांप, देयर वाज अ स्नेक. लेखक डेला फेंक कर सांप से फुसकार करवा लेना बड़ा काम समझता था. सो लेखक whenever he used to reach over there near to that well where there were snakes living, he liked actually throwing things in it, throwing sticks or something else. He loved actually throwing things in it. बच्चों में डेला फेंक कर फुसकार सुनने की प्रवृत्ति जागृत हो गई थी. सो द किड्स ओवर देयर, एक्चुअली द किड्स हु वर गोइंग टू मक्खनपुर टू स्टडी, दे लव्ड throwing sticks into the well, and when the stick goes inside the well, the snake starts hissing, okay, and that sound was loved by those students. So that is the reason why they used to throw Dela into the वेल. कुएं में डेला फेंक कर उसकी आवाज़ तथा उससे सुनने के बाद अपनी बोली सुनने की प्रतिध्वनि सुनने की लालसा उनके मन में रहती थी. सो ऑलवेज दे वर ईगरली वेटिंग फॉर दैट साउंड इन देयर माइंड. दे वर ऑलवेज वेटिंग फॉर दैट साउंड टू बी हर्ड विच द स्नेक मेक्स वंस दे थ्रो थिंग्स इन टू द वेल. They enjoyed that. Dhwani means sound, okay? So that is the reason why they used to throw things into the well, throw sticks or any other things into the well. सांप ने next question, सांप ने फुफकार मारी या नहीं, डेला उसे लगा या नहीं, ये बात अब तक स्मरण नहीं. यह कथन लेखक की किस मनोदशा को स्पष्ट करता है? सो did the samp or the snake hit on the stick, or did the dela that they were throwing into the well hit on the snake? These things actually लेखक को स्मरण नहीं. स्मरण मतलब to remember. Okay, so Lekhak doesn't remember these things exactly. So what do you understand from this line is the question. Let's see the answer. ये घटना 1908 में घटी थी और लेखक ने इसे अपनी माँ को 1915 में 7 साल बाद बताया था. So this incident of playing near to the kuwa and going to school, etc., these incident took place in the year 1915. Sorry, 1908. It took place in the year 1908. But Lekhak had said these things to his mother 7 years बाद, after 7 years in the year 1915. उन्होंने इसे लिखा तो और भी बाद होगा. So though after 7 years he had said about these incidents to his mother, he might have written about this even later. Right? He might have written even after that, because if 7 years it took for him to say his mother, when he was writing, maybe a few years also must have been passed by. अतः उन्हें पूरी घटना का स्मरण नहीं. And this is the reason why लेखक doesn't remember the whole incident. पूरी घटना, whole incident. लेखक ने जब डेला उठाकर कुएं में सांप पर फेंका तब टोपी में रखी चिट्टियां कुएं में गिर गई. सो व्हेन लेखक was actually throwing the stick inside the well, the letters he had put inside his turban or whatever cloth he had tied on his head, actually the entire letter had fallen into the well. ये देखकर दोनों भाई घबरा गए और रोने लगे. So लेखक and his younger brother, both of them, when they saw this, they became scared, घबरा गए and started crying. लेखक को भाई की पिटाई का डर था. लेखक was scared about his brother's brother beating him. तब उन्हें माँ की गोद याद आ रही थी, and he also remembered his माँ's गोद मतलब lap. Okay, the lap of his mother means he was also remembering about how his mother used to take care of him. This is what he was remembering at that time. अब वह और भी भयभीत हो गए थे. Now he became more scared. इस वजह से उन्हें ये बात अब याद नहीं कि सांप ने फुसकार मारी या नहीं, डेला उसे लगा या नहीं. And this is the reason why he doesn't remember that did the snake actually hit on the stick or make some sound or noise, or did the stick hit on the snake. Let's move on to the next one. किन कारणों से लेखक ने चिट्ठियों को कुएं से निकालने का निर्णय लिया? What was the reason that लेखक thought about taking the letters back from the कुआं, from the well? Okay.
निर्णय लिया means the decision to take the letters. Decision. Okay, let's see the answer. लेखक को चिट्ठियां बड़े भाई ने दी थी. So the letters were given to लेखक by his elder brother. डाक खाने जाते वक्त जैसे ही कुआं सामने आया और लेखक ने डेला उठाकर कुएं में सांप पर फेंका, तब टोपी में रखी चिट्ठियां कुएं में गिर गई. So he was going to डाक खाना means post office. On the way he saw that kuwa where he always plays, and when he was throwing dela into the well, the letters which were under his turban or the cloth he had on his head, it fell into the well. ये देखकर दोनों भाई घबरा गए. Both of the brothers got scared और रोने लगे and started crying. लेखक को भाई की पिटाई का डर सताने लगा था. लेखक was disturbed thinking about getting beaten by his elder brother. अब वह और भी भयभीत हो गए थे. He became more scared. इसी मनस्थिति में उसने कुएं से चिट्ठियों को निकालने का निर्णय लिया. And this is the reason why he decided to take those letters back from the well. Next, let's see the next one. सांप का ध्यान बांटने के लिए लेखक ने क्या क्या युक्तियां अपनाई? What were the things or what were the ideas that were used by लेखक to remove, to distract the snake? Okay. सांप का ध्यान मतलब concentration or focus. To distract the concentration or focus of the snake on on the letters, what all things or what all were the different yuktiya means what were the different types of ideas he had used to distract the snake. Let's see the answer. सांप का ध्यान बांटने के लिए लेखक ने निम्नलिखित युक्तियां अपनाई. These were the following ideas he had taken. उसने डंडे से सांप को दबाने का ख्याल छोड़ दिया. He stopped thinking about pressing the stick on the snake and keeping the snake under the stick. He dropped that idea because he knew that it was not possible. सेकेंड वन, उसने सांप का फन पीछे होते ही अपना डंडा चिट्ठियों की ओर कर दिया और लिफाफा उठाने की चेष्टा की. So when the snake's head, fun matlab head, when it was moving a bit back, what did Lekhak do? He thought of, with the danda, with the stick, he thought that he will bring the letters, the envelopes that had letters, lifafa matlab envelope. To take those letters with the help of a stick is what लेखक thought as another idea. डंडा लेखक की ओर खींच आने से सांप का आसन बदल गया और लेखक ने तुरंत लिफाफे और पोस्ट कार्ड चुन लिए और उन्हें अपनी धोती के छेर में बांध लिया. सो नाउ व्हाट हैपेंस? डंडा लेखक की ओर खींच आने से. सो व्हेन लेखक वाज एक्चुअली मूविंग द स्टिक टुवर्ड्स हिम, what happens? The Samp actually moved his position. Asan badal diya means he moved his position. And at the very second, Lekhak took the lifafa, that is the envelopes and all the postcards, he took them and he tied it, bandh liya, on the dhoti he was wearing. Okay, the dhoti means a thing people in village normally wear. So he tied those letters and postcards on the dhoti. Let's see the next question. कुएं में उतरकर चिट्ठियों को निकालने संबंधी साहसिक वर्णन को अपने शब्दों में लिखिए. So we have to write on the साहसिक मतलब adventurous type of thing what लेखक had done to save those letters. Okay, to take those letters back, what kind of adventurous things he had done. We have to write in a few words. चिट्ठियाँ सूखे कुएं में गिर पड़ी थी. The letters had fallen into सूखा कुआं में मतलब सूखा मतलब dry well, means there was no water in that well. कुएं में सांप था. There were snakes in the right now there's only a single snake that is being said about. So there was a snake in the well. कुएं में उतरकर चिट्ठियां लाना बड़ा ही साहस का कार्य था. It was very adventurous thing to bring the letters going inside the well and taking those letters where actually snake is also there inside it.
लेखक ने इस चुनौती का स्वीकार किया. चुनौती मतलब चैलेंज. सो लेखक एक्सेप्टेड दिस चैलेंज. ही हैड टू एक्सेप्ट बिकॉज ही हैड नो अदर ऑप्शन ऑफ कोर्स. लेखक ने 6 धोतियों को जोड़कर डंडा बांधा और एक सिरे को कुएं में डालकर उसके दूसरे सिरे को कुएं के चारों ओर घूमने के बाद गांठ लगाकर अपने छोटे भाई को पकड़ा दिया. सो नाउ व्हाट लेखक डज इज 6 धोतियाँ means he took 6 dhotis. Some was tied on his head and all those things, so he had total 6 dhotis he took from his brother also, and he tied all of them. Okay, and he also tied a stick to it, and one end he put inside the kuwa and the other end he actually कुएं के चारों ओर घूमना मतलब he was going around the well for all the 4 sides of the well, and he tied knot. गांठ मतलब he tied knot on it and he gave it into the hands of his small brother to hold that end of dhoti. लेखक इसी धोती के सहारे कुएं में उतरा and with this धोती's help he went inside the well. जब वह धरातल के 4-5 गज ऊपर था, he was just 4 or 5 गज up from the धरातल. धरातल means धरती, the land. उसने सांप को फन फैलाए देखा. He saw that सांप was sitting there. The snake was there with fun फैलाए. He was sitting with that how that snake's head looks very spread and big. That is how the snake was sitting inside. वह कुछ हाथ ऊपर धोती पकड़े लटका रहा ताकि वह उसके आक्रमण से बच जाए. He was लेखक didn't go entirely into the well. He was a few feet, we can say. He was up to the snake. He was above the snake, and he was holding there itself because he was scared if he goes more inside then snake was going to bite him. सांप को धोती पर लटक कर मारना संभव नहीं था और डंडा चलाने के लिए पर्याप्त जगह नहीं थी. So it was not easy for लेखक to attack the snake directly by holding on to dhoti, and it was not possible. There was no much place over there. It was a very small place. If you had seen my summary, you know that it was a very small place inside the kuwa, inside the well. So it was not easy for him to easily attack the सांप, the snake, with the help of stick, डंडा. उसने डंडे से चींटियों को खिसकाने का प्रयास किया कि सांप डंडे से चिपक गया. So he was actually trying to take those letters with the stick, but the snake actually चिपक गया means he came and got stuck to the stick. सांप का पिछला हिस्सा लेखक के हाथ को छू गया. The last part of the snake actually got touched with लेखक's hand. Okay, लेखक ने डंडा फेंक दिया. When this happened, लेखक threw the stick into the कुआं. डंडा लेखक की ओर खींच आने से सांप का आसन बदल गया और लेखक ने तुरंत लिफाफे और पोस्ट कार्ड चुन लिए और उन्हें अपनी धोती के छोर में बांध लिया. Now what happens? When he was trying to take that stick back, the snake had changed its position, and soon in that very second, Lekhak took the envelopes of letters and also postcard and tied it with his dhoti. Okay. Now this was the adventurous things how लेखक was actually saving or taking back those letters. Let's see the next question. इस पाठ को पढ़ने के बाद किन किन बाल सुलभ शरारतों के विषय में पता चलता है? What are the different kinds of shararat, all mischievous things that kids do. So what all are those things we get to know about kids is the question. इस पाठ को पढ़ने के बाद निम्नलिखित बाल सुलभ शरारतों के विषय में पता चलता है. बाल सुलभ मतलब childish behavior, childish mischievous behavior they show. These are those following things. बच्चे झरबेरी के बेर तोड़कर खाने का आनंद लेते हैं. So what are the mischievous things the kids do? One was they pluck berries from the tree and eat them. स्कूल जाते समय रास्ते में शरारतें करते हैं. They do all kind of mischievous things on the way to the school. कठिन एवं जोखिम पूर्ण कार्य करते हैं. They do all kind of difficult things, and also जोखिम पूर्ण means the things that actually hurt them. You know that kids normally do some things which actually hurt them, but they don't care at that time. They just have to play all those mischievous things. Next one, जानवरों एवं जीव जंतुओं को तंग करते हैं. They also disturb the animals or all kind of small insects.
जीव जंतु, all living insects and जानवर, all kind of animals, these kids actually disturb them, तंग करते हैं. कुएं में डेला फेंक कर खुश होते हैं. They become happy, when they throw things into the well. माली से छिपक कर फल तोड़ना पसंद करते, छिपकर फल तोड़ना पसंद करते हैं. माली मतलब गार्डनर. So they like hiding, छिपकर, hiding from the gardener and plucking flowers. गलत काम करने के बाद सज़ा मिलने से डरते हैं. I don't know what happened to me. So गलत काम करने के बाद, after doing some kind of wrong thing, when they're doing, they don't think about, oh my God, I'm doing a mistake. They just do it very happily and playfully. After that, they start getting scared about the saza, about the punishment that they're going to get. Let's move on to the next question. मनुष्य का अनुमान और भावी योजनाएं कभी कभी कितनी मिथ्या और उल्टी निकलती है का आशय स्पष्ट कीजिए. मनुष्य का अनुमान मतलब वी एक्चुअली जज पीपल वेरी इजीली, और वी जज डिफरेंट थिंग्स दैट ओके दिस इज गोइंग टू बी हैपन दिस इज गोइंग टू हैपन लाइक दिस इज गोइंग टू हैपन. भावी योजनाएं मतलब फ्यूचर प्लानिंग. वी प्लान समथिंग दैट ओके आई एम गोइंग टू डू दिस एंड आफ्टर दिस वील डू दिस. अनुमान लगाते हैं. वी वी मेक अप्रॉक्सीमेशन. वी थिंक अबाउट अप्रॉक्सीमेटली दिस इज गोइंग टू हैपन. दिस इज हाउ वी डू फ्यूचर प्लानिंग. कितना मिथ्या और उल्टी निकलती है. हाउ ऑपोजिट एक्चुअली इट हैपन्स. वी प्लान वन थिंग बट हाउ ऑपोजिट हैपन्स टू दैट. उल्टा मतलब ऑपोजिट टू दैट. आशय स्पष्ट कीजिए. वी हैव टू एक्सप्लेन दिस लाइन. ओके, लेट्स सी द आंसर. इस कथन का आशय है कि मनुष्य हर स्थिति से निपटने के लिए तरह तरह के अनुमान लगाता है और भावी योजनाएं बनाता है. सो इन ऑल काइंड ऑफ स्थिति, इन ऑल सिचुएशन, मनुष्य ऑलवेज इन ऑर्डर टू निपटना मतलब इन ऑर्डर टू ओवरकम अ पर्टिकुलर सिचुएशन, वी ऑलवेज मेक सम काइंड ऑफ प्लानिंग. वी थिंक अबाउट हाउ टू डू दिस, हाउ टू डू दैट. वी डू योजनाएं मतलब वी डू प्लानिंग. परंतु उसकी सारी योजनाएं सफल नहीं होती. बट ऑल द प्लानिंग्स डजंट बिकम सक्सेसफुल. सक्सेसफुल. उसे कभी सफलता मिलती है तो कभी विफलता. समटाइम्स इवन वी गेट सक्सेस बट समटाइम्स वी गेट विफलता माने फेलियर. ओके, इससे कई बार मनुष्य निराश हो जाता है. एंड व्हेन वी गेट फेलियर मीन्स व्हेन थिंग्स डोंट गो अकॉर्डिंग टू आवर प्लान, वी बिकम निराश, वी बिकम सैड. इस पाठ के लेखक ने कुएं से चिट्टियां निकालने के तरह तरह के अनुमान लगाए, योजनाएं बनाई और उसमें फेरबदल भी करना पड़ा. अंततः उसे सफलता मिली. In this story also we can see how Lekhak was actually making different plans on taking back those letters. He was thinking and thinking, planning and planning, but he had to change his plans. Not all his plan was successful. He had to do different things in order to become successful in taking back those letters. Okay, let's see the last question. फल तो किसी दूसरी शक्ति पर निर्भर है. पाठ के संदर्भ में इस पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए. फल तो मतलब द रिजल्ट. ओके, सो रिजल्ट डिपेंड्स ऑन दूसरी शक्ति. देयर इज अनदर पावर हु एक्चुअली डिसाइड्स एवरीथिंग एंड एवरीथिंग हैपन्स ऑन द बेसिस ऑफ दैट वन सिंगल पावर. ओनली द रिजल्ट्स दैट वी गेट इज ऑन द बेसिस ऑफ दैट सिंगल पावर इज अ क्वेश्चन. वी हैव टू एक्सप्लेन दिस सेंटेंस. मनुष्य तो कर्म करता है पर उसे फल देने का काम ईश्वर करता है. मनुष्य कर्म करता है. कर्म मतलब काम करता है. मनुष्य, वी ह्यूमन बीइंग, ओनली वी कैन डू सम वर्क और ओनली वी कैन प्लान, बट द एक्चुअल थिंग दैट हैपन्स विल बी अकॉर्डिंग टू द गॉड. वॉट एवर गॉड डिसाइड्स और प्लान्स इज द ओनली थिंग दैट हैपन्स. फल देने का काम, दैट इज द रिजल्ट ऑफ वॉट वी गेट, इज इन द हैंड्स ऑफ गॉड, ईश्वर. मन चाहे फल को पाना मनुष्य के बस की बात नहीं. Man chahe means what your man wishes, what your mind wishes. It is not in your hands that whatever your mind wish you are going to get that. It's not in your hand. It's not in the hands of human beings. ये तो उस शक्ति पर ही निर्भर करता है जो फल देती है. This depends on उस शक्ति, on that power who gives us the फल, who gives us the end result. Only in his hands is the end result. Whatever we get is in his hands. That is in the hands of God. इस पाठ में लेखक ने कुएं से चिट्टियां निकालने के तरह तरह के अनुमान लगाए, योजनाएं बनाई और उसमें फेर बदल भी करना पड़ा. अंततः से सफलता मिली. सो एज आई सेड अर्लियर, लेखक made different planning, different decisions, but he had to keep changing them. फेर बदलना means he kept changing them and at the end he got his result. He was successful in taking those letters back. गीता में भी कर्म के महत्व को दर्शाया गया है.
कर्मणि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन. Now, this I don't know what it means. It is something from Bhagavad Gita, written in Sanskrit. Actually, the meaning is only this: that the the manushya, that is human beings, can only do karma. They can do their work and finish. The end result is always in the hands of that one single power, that is God. Okay, I hope the question answers were clear. Of course, you will have your own answers from your schools, respective schools, but of course, it will have all these points, so it will be very easy and clear for you to understand. So, thank you so much for watching my video. Keep supporting. Bye bye.